In a major development for India's defense, especially its maritime waters, the Indian Navy today commissioned two state-of-the-art stealth frigates, INS Udayagiri and INS Himgiri. The commissioning ceremony was presided over by the Defence Minister Rajnath Singh and the Chief of Naval Staff at the naval base in Visakhapatnam. Recalling the Navy's role in Operation Sindoor, the Navy Chief called India's growing naval might a credible deterrence against its enemies. Uncertainties और कॉम्पिटिशंस के भरे इस युग में भारतीय नौसेना की समुद्र में ओवरवेलमिंग फोर्स डिलीवर करने की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक क्रेडिबल डिटरेंस है। हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी प्रदर्शित किया, जब हमारी यूनिट्स की स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट और एग्रेसिव पोस्चरिंग ने पाकिस्तान की नौसेना को एक तरह से कैद करके रखा और उन्हें मजबूर किया कि काइनेटिक एक्शंस को समाप्त करने का हमसे अनुरोध करें। Udayagiri and Himgiri are part of the Project 17 Shivalik class frigates. Both frigates are fitted with combined diesel or gas propulsion, an integrated platform management system and advanced Indian-made weapons and sensors. The frigates embody India's vision of self-reliance with 75% indigenous content. Both the frigates were also designed in-house by the Warship Design Bureau. Both Udayagiri and Himgiri have several advanced capabilities on board, including long-range surface-to-surface air missiles, supersonic BrahMos missiles, rocket and torpedo launchers, combat management system. Speaking at the ceremony, in fact, Defence Minister Rajnath Singh said no future Indian Navy ship will be constructed outside the country. INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। Udayagiri and Himgiri are expected to join the Navy's Eastern Fleet, safeguarding India's maritime interests, especially in the Indian Ocean. Ships follow in the proud wake of legends. Commanding Officer Desik and Ships Company of Udayagiri. To stay up to speed with the latest news, download the WION app and subscribe to our YouTube channel.